Hello dear students, I am a computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know we are discussing about cyber safety. I already told you about cyber crimes, all types of cyber crime, and now we are discussing about cyber prevention. It means how to prevent or how to save ourselves from cyber crimes. So today I will tell you how to register a legal complaint against cyber crime. सो अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के पर्सन के ऊपर कोई भी साइबर क्राइम होता है सो यू कैन रजिस्टर आ कंप्लेन वेरी इजीली. यू डोंट नीड टू गो टू पुलिस स्टेशन. You can register a complaint with the help of internet. So to register a complaint you just need to search a website which is cybercrime.gov.in. This is the official website of government to register cyber complaints. So now after searching you will get this type of interface. This is a home page. As you can see, National Cybercrime Reporting Portal. So this is the official page. So on this page you can see at the left side it is showing learn about cybercrime. So you can learn all the details about cybercrime, and in media gallery some audio files are showing. So you can also listen these audio files. So these audio files will help you to understand cybercrime. So at the right side there is the option of file a complaint. So to file a complaint we will click on this option. After clicking on this option you will get this page. So as you can see it is showing all the guidelines which you have to follow while registering a complaint. So after reading all the guidelines, so you have to click on I accept. After clicking on I accept you will get this page. So as you can see now on this page it is showing two different images. The first one is report cybercrime related to woman or child, and the second one is report other cybercrime. So if you want to register a cybercrime related to any woman or child, any child abuse or any woman harassment, so you have to click on these options. Now you can see it is showing two options. First one is report anonymously and second one is report and track. So if you want to register a complaint by hiding your details, you don't want to reveal your details, so you have to click on this option. And if you don't want to hide your details, so you can click on this one. Now on the second part it is showing report other cybercrime. So now we will click on this option. After clicking you will get this type of interface. As you can see it is asking about select state, username, complaint name, mobile number. So you have to select your state. You have to enter your username, mobile number. After entering mobile number you will click on get OTP. So whenever you click on get OTP it will send a OTP which is known as one time password on your mobile number. So you have to enter that OTP in this box. After entering this OTP it will show you some questions you have to answer. As you can see it is showing 22 plus 15, so it is 37. So you will write 37 in this box and then it will move you to the next page. So if I will click on select state, so as you can see it will show the complete list, so you can select your state. After entering all the detail it will move you to the second page. So now first option is category of complaint. So you have to choose the category of complaint. So as you can see it is showing online and social media related crime, online financial fraud, hacking, online cyber trafficking, online gambling, ransomware,
cryptocurrency crime, cyber terrorism, and any other cyber crime. So we will choose cyber terrorism. You can choose any of them on which you want to register a complaint, which type of cyber crime you are facing. So you have to choose that particular type. So now I am going to choose cyber terrorism. On the second box, it is showing subcategory of complaint. So now you have to choose subcategory. So in subcategory, it will show you cheated by impersonation, cyberbullying, email phishing, and many more, online job fraud, etc. So you can select a suitable subcategory which relates with your complaint. After selecting these options, it will show you approximate date and time of incidence. So you have to enter date and time. Reason for delay. If you are registering the complaint delay, मतलब आपके साथ जो साइबर क्राइम हुआ है और आप डिले कंप्लेन कर रहे हैं, डिले का मतलब 10 दिन बाद कर रहे हैं या 15 दिन बाद, सो यू हैव टू एंटर दैट रीजन इन दिस बॉक्स. नाउ वेयर डिड द इंसिडेंट ओक्योर. सो ये इंसिडेंस आपके साथ कहाँ पर हुआ वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इट इज शोविंग मैनी ऑप्शंस लाइक ईमेल, फेसबुक, हाई, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, ट्विटर एंड मैनी मोर. सो जिस जगह के थ्रू, जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ ये इंसिडेंस हुआ वो आप यहाँ से चूज करेंगे. आफ्टर चूजिंग दिस, सो एज यू कैन सी आई चूज ईमेल. सो इट इज़ आस्किंग ईमेल आईडी. अब यहाँ पे आपको वो वाली ईमेल आईडी फिल करनी है जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपको साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है, आपके पास ईमेल आया और उस ईमेल के थ्रू आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है. तो उस ईमेल को आपको यहाँ पे एंटर करना है. अपना ईमेल नहीं एंटर करना है. जिस ईमेल के थ्रू आपको साइबर क्राइम हुआ है वो ईमेल यहाँ पे आप एंटर करेंगे. एंड सपोर्टिंग एविडेंस, इट मीन्स कि जो ईमेल वो आया है उसका आप एक फ़ोटो लेंगे और वो फ़ोटो को लेकर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड कर देंगे. अगर आप यहाँ पे ईमेल की जगह पे कोई अदर ऑप्शन चूज़ करते हैं, एज यू आर चूजिंग फेसबुक, सो यहाँ पे आपको उस फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे जो है डालना होगा और उस फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा. सो आफ्टर फिलिंग ऑल दीज डिटेल्स, इट इज़ शोविंग प्लीज़ प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट. सो जो भी आपके साथ इंसिडेंस हुआ है उससे रिलेटेड आपको अपने वर्ड्स में कंप्लेंट को लिखना होगा, सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. देन क्लिक सेव एंड नेक्स्ट. After clicking on save and next, it will show you this page. So as you can see, सस्पेक्ट डिटेल्स मीन्स जिसने आपके साथ साइबर फ्रॉड करा है, अगर आपके पास उसकी कुछ डिटेल है तो आप ऐड कर सकते हैं. और इफ़ यू डोंट हैव एनी डिटेल, सो डोंट वरी. सो अगर डिटेल है, सो यू हैव टू एंटर सस्पेक्ट नेम. नाउ सेकेंड ऑप्शन इज सेलेक्ट आईडी. सो सस्पेक्ट की अगर आईडी है, बैंक अकाउंट नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ईमेल है, कोई भी आईडी है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे. अगर आप कोई आईडी चूज़ करते हैं तो उसका नंबर, ईमेल चूज़ करेंगे तो उसका ईमेल डालेंगे, आप बैंक अकाउंट चूज़ करेंगे तो बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे. उसके बाद नेक्स्ट. सो जैसे आप ये डिटेल फिल कर देंगे, आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स, इट विल शो यू दिस बॉक्स. नाउ next option is please upload any photograph of suspect. So if you have any photograph of suspect, so you can upload the photograph. Choose the file and click on upload. Now do you want to share address of suspect? So अगर suspect का आपको एड्रेस पता है तो आप yes पर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप yes पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद it will show you this type of box and you can see it is asking about house number, country, street name, state, colony, district, and all the other details. And if you don't know the address of suspect, so you just have to click on no. After clicking on no, click on save and next. After clicking on save and next, it will move you to the next page. So now your complaint is registered. It means all the details which you enter, it is showing a preview. So you can check all the details which you enter, it is correct or not. After
checking all the details, you have to click on I agree and then confirm and submit. After confirming and submit, it will show you this type of detail. So now as you can see, it is showing that your complaint successfully submitted. Acknowledgement number is this. So you can paste this acknowledgement number for future. It means if you want to track your detail of complaint, so you can track your complaint detail with the help of this number. So you can note down this number. So after clicking on OK, it will show you this page. So you can download the PDF audio of your complaint. सो ये बहुत ज़्यादा एक इजी तरीका है जिसके थ्रू आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है और आप ऑनलाइन अपने साथ हुए किसी भी या आपके फ्रेंड के साथ हुए साइबर क्राइम को ईजिली कंप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ये सबको पता होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें थी और ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, दिस इज़ अ लीगल वेबसाइट। तो लीगल वेबसाइट है तो अगर आप इस पर कोई भी कंप्लेन करते हैं तो उस पर 100% एक्शन होता है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। सो दैट इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।